वक्त आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह For removing the civil population and neutralizing the terrorists without any damage to civil life or property remained there. There were 14 houses which were evacuated, and in the first light at around 7, we drew fire from the terrorists before we could give them any offer to surrender. And based on the swift redeployment, we were able to corner them into one place. They were neutralized while trying to escape from the area, and in 9 hours of a grueling battle with them, they were neutralized successfully. There was no major damage to any civilian property or life which was caused in the area of Ribbon, while our troops risked themselves to effectively neutralize these terrorists. Last night again we received a specific input from Jammu and Kashmir Police. This was in the village of Pinjora near Shopian, with the presence of some notorious terrorists who were harassing the civilians, being present in a couple of houses there. These terrorists have been known to disrupt the normal life there, caused excesses on the civil population. They have been known to kill non-local labor, also abduct policemen, and involved in the harassment and certain injuries to truck drivers last year. The persecution of innocent civilians and was a routine for them. They were again used to using the normal civil population for giving an early warning to them, which was neutralized by the swift redeployment of our troops of 44 RR in the area, and in a 4-hour operation which began at 3 in the morning, they were neutralized. We neutralized 4 local terrorists in that area. This also led to recovery of some weapons and warlike stores in both these operations. With the neutralization of these 9 terrorists in this Rambiara belt, we hope that the efforts to restore normalcy in this area will be fruitful, and the civilians will be able to lead their normal way of life in due course. Thank you. Yeah, thank you. Ladies and gentlemen, as the GOC has given the details of the operation, in fact last 10 days we had 3 major operations, and last couple of months we were getting various inputs with regard to targeting the security forces which are deployed on ground for law and order and enforcing the lockdown, snatching the weapons, then the threat of VBID. And I think these 3 operations which have been successfully conducted by the security forces, we have denied them their targeting the security forces on ground. The first operation was Pulwama, then the second operation yesterday, wherein 5 militants were killed. In fact, one of the militants, Owais, was involved in the recent attack on the SHO of Yaripura, and he had planned a series of attacks on the security forces around the Eid time to attack and snatch weapons, and then he was also involved in the kidnapping of policemen. It was quality input and well coordinated efforts of all the security forces that resulted in successful operation without any collateral damage. The second part is containing the law and order and the crowd which usually gathered around the encounter site. So, as the Corps Commander has already said, that we are thankful to the general public that the parents and the people in the villages, they are able to, not allowing the youngsters to come out close to the encounter sites. Lastly,
I would request all the people across the Kashmir Valley, अभी हम लोग जो है वो कोविड की जो परेशानी है उससे जूझ रहे हैं, और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो नंबर है वो, अगर हम कल का नंबर देखें तो वो 600 से ज़्यादा है, और ये नंबर काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है, जबकि लॉकडाउन भी है और लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त भी नहीं है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इन जगहों पे इकट्ठा होने से मना करें, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना वायरस का है वो होने लगा है, और उसी की वजह से नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो हाल फिलहाल में जो एनकाउंटर्स हुए उसमें सभी जगह नौजवान जो है इकट्ठे हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव भी किया है। तो मैं दोनों बातों को लेकर उनको ये सलाह देना चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा कि वो एक तो सिक्योरिटी रिस्क भी है और दूसरा कोरोना का रिस्क है, उसमें उनको अपने आप को भी बचाना है और बाकी समाज के लोगों को भी बचाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ये कोरोना वायरस फिर उतनी ही तेज गति से पूरे समाज में फैलेगा, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि सभी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने नौजवान बच्चों को ये बात समझाए कि कोरोना की जो लड़ाई है वो एक ऐसी लड़ाई है कि जिसमें हम सब लोग साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तभी उसको जीत पाएंगे, और इस तरह से इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा होंगे तो फिर ये हम सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। धन्यवाद। Yeah, thank you, Rajesh, and thank you, Sen Gupta. Before I open up for questions, I thought I'll just make 2-3 small statements. One is that we will continue with our professional operations, in a manner that we cause minimum inconvenience to the public, both in terms of property as well as the human resource, the population in general. And our primary aim remains to bring in peace. If we are neutralizing somebody, it is with an intention that people can live without fear. They can go about their routine in a manner where their livelihood is not disturbed. That is our primary focus. And I would also appeal to the population not to get swayed by the misinformation that is coming from across Pakistan. This is very important. He is on a hyperdrive to bring in, false propaganda. If there is one person who is not happy with what is happening today in the valley in terms of peace, is Pakistan. So we need to fight that. And the people, the media houses which are standing in front of me, you have an important role to play. I would say even the 1.2 billion population, the 120 crore people also have a role to play in demolishing false narratives which are coming from Pakistan. While we are fighting on ground, we will definitely look forward to the cooperation of the Awam and the population in general, to spread the right message and demolish the false narratives. So with this, we will open up for questions. Yeah, let us give the lady the first opportunity. Raju, I would like to take two of the questions because both of them are interlinked. First is that how is the situation post Article 317 vary as far as the militancy and the militancy number is concerned? The other question is. तो देखिए, सेना की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 दिनों में अब तक कुल 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आज जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, सेना ने ये साफ तौर पर कहा कि आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जो है वो कम से कम 4 आतंकवादी आज मारे गए हैं और कल 5 आतंकवादी मारे गए, जिसमें कि एक हिजल मुजाहिदीन का स्वघोषित कमांडर भी था। तो कल 5 और आज 4, कुल मिलाकर 9 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है सेना की तरफ से ये कही गई कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बचा जाए, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने नाम भी लिया कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की भ्रामक खबरें, जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन है, वो तमाम चैनलों के जरिए पहुंचाई जाती है और उससे लोग फिर उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें गलत सूचना जाती है और फिर वो सड़कों पर निकल आते हैं। इसलिए सेना ने साफ तौर पर कहा लोगों से कि आप
अपने घरों से बाहर ना निकलें। अभी वैसे भी कोविड महामारी का माहौल है, आप एक साथ ना इकट्ठा हों, आप उनसे भी बचें। और दूसरी बात, किसी भी भ्रामक खबरों से भी बचें। और उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की ये कि कल और आज मिलाकर कुल 9 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। और आज की बात मैं करूं तो दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पिंजोरा इलाके में आज सूचना मिलने के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई और उसमें 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया और कल 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था।